बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th इंग्लिश क्लास। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। बच्चे, प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 8 की समरी की थी, ठीक है। और आज हम यूनिट नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो सबसे पहले आपने अपनी नोटबुक में मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, डेट एंड डे मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद आपने यूनिट का नंबर और यूनिट का नेम मेंशन करेंगे। देन आप हेडिंग देंगे एक्सरसाइज ए है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Question number 1 is, how is wind described in first stanza? Answer लिखिए। In the first stanza, wind is described in the form of destruction that smashes everything. Question number 2 है, with what wind is compared in the first stanza? Answer लिखिए। In the first stanza, the wind is compared with the monster of destruction that destroys everything. Question number 3 है, what is wind doing to all men's work? ठीक है, आंसर लिखिए। Man is wrecking to all men's work. Sorry, wind is wrecking to all men's work. ठीक है, यानी जो हवा है वो इंसान के तमाम काम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। How does the sea look like when wind is still? ठीक है कि जब हवा रुक जाती है या साकिन होती है तो जो मंजर होता है वो कैसा होता है, ठीक है। When wind is still, the sea looks peaceful and pleasant. Next है क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 है, what comparison is made in the second stanza? Answer लिखिए। In the second stanza, the real truth of wind, the real truth of wind is compared with eternal stillness, comma, bright blue sky, and all that we hear. ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिशनल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन इट्स सेंटर इज इन ट्रूथ। क्वेश्चन राइट करें। आंसर लिखिए। It means that truth is found in its center, full stop. Appearances are deceptive. Truth lies far away these material things. Truth lies far
away from these material things। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर से जो भी कंप्लीट हो गए हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स जो है कंप्लीट हो गए हैं। होप सो आपको क्लियर हो गए होंगे। स्टूडेंट को आपने बहुत अच्छे से रीड आउट करना है, ठीक है, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। अब आप अपनी बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर है 92। इसमें देखिए पोएम का थीम दिया हुआ है, नेचर टीच अस लेसन्स थ्रू विंड वाटर माउंटेन्स एंड लाइट। ठीक है, कि जो नेचर होती है वो हमें बहुत सारे सबक सिखाती है। ठीक है, किसके जरिए? हवा के जरिए, पानी के जरिए, माउंटेन्स के जरिए, लाइट के जरिए। यानी आप खुद इनकी पॉजिटिविटी जो है वो फील कर सकते हैं। जैसे इस पोएम में हमें विंड जो है वो एज एन इमेजरी यूज की गई है। ठीक है, अब इसी तरह से वाटर है। ठीक है, वाटर की भी अपनी क्वालिटीज हैं। आपको पता है कि एक चीज माइंड में रखिएगा कि हमेशा जो है ना, जो एक्सट्रीम चीज होती है ना, ठीक है, वो हमेशा नुकसानदेह होती है। ठीक है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखिए, wind in the form of storm smashes everything in its range. It destroys trees, fields, and buildings. But when the wind is gentle and cool, it gives life to birds and humans. We have to experience storms to enjoy peace. ठीक है, नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज देखिए, वोकैबुलरी में एक्सरसाइज ए है, पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम व्हिच मींस द सेम एज द फॉलोइंग। नंबर ए है एक्सट्रीमली नॉइसी। एक्सट्रीमली नॉइसी मीन, अब आपने एक वर्ड इसके लिए सजेस्ट करना है। ठीक है,